মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বাৰু মহাত্মা গান্ধীৰ নাম শুনিছানে? মহাত্মা গান্ধী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি। তেখেতক ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ পিতা বুলি কোৱা হয়। তেখেতৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষত আৰু অনেক মহান ব্যক্তি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি জৱাহৰলাল নেহেৰু, মতিলাল নেহেৰু, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেখেতসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ অনেক মহান ব্যক্তি আছে, যিসকলৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ এগৰাকী মহান মনীষী বা মহান ব্যক্তি হিচাপে। আজি আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠটো হৈছে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ ওপৰত, আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। আমি তোমালোকৰ লগত এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠটো 5 নম্বৰ পাঠ, আৰু এই 5 নম্বৰ পাঠটিৰ নাম হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। আহাচোন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত কি আছে চাওঁ আহা। শাম কা সময় হে, বিনু अपने कमरे में बैठी है। ইয়াত কৈছে যে গধূলিৰ সময় আছিল, বিনুৱে নিজৰ কোঠালিত বহি আছিলে। वो बहुत परेशान है, তাই বহুত চিন্তিত হৈ আছে। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है, কাৰণ তাইক স্কুলৰ পৰা এটা হোমৱৰ্ক দিছে, আৰু হোমৱৰ্কটো হৈছে যে অসমৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ ওপৰত তাই এখন প্ৰবন্ধ লিখিব লাগে। पर वो कुछ लिख नहीं पा रही है, কিন্তু তাই কাৰো কথা ভাবি পোৱা নাই, কি লিখিব কি নিলিখিব চিন্তা কৰি আছিলে। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई, আৰু সেইকাৰণে তাইৰ বায়েক দিদি বিশাখাক তাইৰ চিন্তাৰ কাৰণটো ক'লে। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, विशाखाए হাঁহি মাৰি ক'লে, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, মই তোমাক এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে কওঁ। वे महान व्यक्ति है, আৰু সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ जी, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। তেখেত আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু আমাৰ হিন্দী অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দীৰ তেওঁ এগৰাকী হিতৈষী आसिले। उनका जन्म 6 जन 1890 को नगाँव जिले के रहा में हुआ था। तेखेतर जन्म 6 जून 1890 सनत नगाँव जिला रखात होइसिले। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। तेखेतर पितृर नाम आसिले डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ, और माकर नाम आसिले प्राणेश्वरी देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। तेखेतर प्राथमिक शिक्षा रहाते आरम्भ होइसिले। वे एक मेधावी छात्र थे। तेखेत एगराकी पारदर्शी चुका बुद्धिर छात्र आसिल। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। तेखेते 1907 सनत गुवाहाटीर कॉटन कॉलेजिएट स्कूलर পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম শ্ৰেণীত प्रथम विभागत पास करिছিলে। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। तार पिছত तेखेते कॉटन कॉलेजर पৰাই आईए परीक्षा पास करिছিলে। আগৰ দিনত हायर सेकेंडरी परीक्षाक आईए বুলি কোৱা হৈছিলে, अर्थात इंटरमीडिएट। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। तार पाছত तेखेते उच्च शिक्षा ग्रहण কৰিবৰ বাবে কলিকতালৈ গৈছিলে। वहाँ से उन्होंने बीए, एमए और वकालत की डिग्रियाँ प्राप्त की। तार पৰাই तेखेते बीए, एमए আৰু উকিল अर्थात लोर शिक्षा ग्रहण কৰিছিলে। बीनू ने पूछा, बीनुए बायকক সুধিলে, दीदी बरदলৈ जी के रुचि के बारे में जरा बताइए ना। बरदলৈ जीर हॉबी কি আছিলে সেই বিষয়ে অকমান ক'বা নেকি? सुनो मैं बताती हूँ, विशाखाए ক'লে। তেতিয়াহ'লে শুনা মই কৈছোঁ। गोपीनाथ बरदলৈ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। गोपीनाथ बरदলৈ एगराकी ভাল गायक আৰু খেলুৱৈ आसिले। उनकी रुचि नाटक में भी थी। तेखेतर रुचि नाटकतो आसिल। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। महात्मा गांधीर आह्वान क्रमे तेखेते स्वाधीनता आंदोलनत জঁপিয়াই পৰিছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতে কেইবাবাৰো জেললৈ যাবলগীয়া
হৈছিলে। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र बुद्धदेव हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथ की रचना की। আৰু জেলত থকা অৱস্থাতে তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে, যেনে শ্ৰী रामचंद्र बुद्धदेव हजरत मोहम्मद आदि। उनके द्वारा रचित अन्य दो ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग। তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত আন দুখন মহান গ্ৰন্থ হৈছে महात्मा गांधी আৰু अनाशक्ति योग। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती है क्या? তাৰ পাছত বিনুৱে ক'লে যে বাইদেউ আপুনি তেখেতৰ বৈবাহিক আৰু কৰ্ম জীৱনৰ বিষয়ে কিবা জানানে, ক'বানে মোক? তেতিয়া বিশাখাই ক'লে विशाखा ने कहा उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरबाला बरदले से उनकी शादी हुई थी। उत्तर गुवाहाटीर भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआर कन्या श्रीमती सुरबाला बरदলৈৰ সৈতে তেখেতৰ বিবাহ হৈছিলে। वे सदा जीवन और उच्च विचार के थे। তেখেত সদায় उच्च विचारों एगराकी व्यक्ति आছিলে। वे हमेशा असमवासियों की भलाई के लिए काम करते थे। তেখেতে সদায় অসমবাসীৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে তেখেতক বহুত ভাল পাইছিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতক লোকপ্ৰিয় নামেৰে জনা যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ নাম হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ, কিন্তু তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ? লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বুলি কওঁ। दीदी बरदলৈ जी ने हिंदी के लिए क्या किया था? তাৰ পাছত বিনুৱে ক'লে যে বৰদলৈ জীয়ে হিন্দী ভাষাৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিছিলে। আচ্ছা তো ইও ভি শুনো। তেতিয়া বিশাখাই ক'লে তেতিয়াহ'লে এই কথাও শুনা। बरदলৈ जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। बरदলৈ जीয়ে 3 नवेम्बर 1938 চনত গুৱাহাটীৰ असम राष्ट्रभाषा प्रचार समितिर স্থাপনা কৰিছিলে। वे इन समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। আৰু এই সমিতিখনৰ তেওঁ হৈছিলে প্ৰথম অধ্যক্ষ। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की। তেখেতৰ প্ৰয়াসতে 1948 চনত गुवाहाटी विश्वविद्यालयर स्थापना হৈছিল। 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ। 5 আগষ্ট 1950 চনত তেখেতৰ দেহাৱসান घटिছিল। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। আৰু তেখেতক মৰণোপৰান্ত অৰ্থাৎ তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল। वाह दीदी, आपने बड़े संक्षेप में बरदলৈ जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। বিনুৱে ক'লে বাহ দিদি, তুমি খুব ধুনীয়াকৈ সংক্ষিপ্তভাৱে মোক বৰদলৈৰ জীৱনৰ বিষয়ে মোক ক'লা। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। আৰু এতিয়া মই তেখেতৰ জীৱনৰ ওপৰত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰিম বুলি বিনুৱে ক'লে। এনেদৰেই বায়েক বিশাখাই বিনু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ জীৱনৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'লে। এই পাঠটো থকা কিছুমান কঠিন শব্দৰ অৰ্থ আহাচোন জানি লওঁ। পৰেশান মানে হৈছে হেৰান। স্বাধীনতা মানে হৈছে আজাদী। কুদপৰ্ণা शामिल होना, वैवाहिक विवाह संबंधी कन्या बेटी। स्थापना किसी कार्य का नींव डालना। मरणोपरांत मृत्यु के बाद। भलाई মানে উপকাৰ। অধ্যক্ষ মানে সভাপতি। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।